Why brand claims that it is the most potent formula? Let me tell you why. 10% serum. हाँ क्या? Now you can't say there is a fine line. क्या? हाँ मैम मेरी दोबारा दोबारा कराती का. Hi everyone, welcome back to our channel. This is Neha. How's you all? In today's video, I'm going to compare two multi-peptide serums, one from the Minimalist, second one is from the affordable brand Van Dyke. Even the Minimalist is the affordable one, but the second one is the super affordable. I'm talking about Minimalist multi-peptide serum 10% with 7% matrixyls plus oligopeptides plus polypeptides, which repairs and smoothens wrinkles, and it is suitable to all skin types. And the second one is the Van Dyke multi-peptide serum 10% with polypeptides, oligopeptides with 7% matrixyl, which repairs, smoothens skin, and it is also suitable to all skin types. I'm gonna compare these two serums in this video. I'm using them more than 1 month now, and even for 2-3 days I tested them very seriously because मैंने half face पे इसको लगाया और half face पे इसको लगाया, so that मैं proper mind makeup कर पाऊँ कि इनमें difference क्या है. Before comparing these multipeptides, let's talk about each of them individually. If I talk about this multipeptide serum from the brand Minimalist, it has very simple packaging, black glass bottle है जिसमें serums no doubt काफी देर तक safe रहते हैं. कि मेरे ख्याल से हर सीरम की ग्लास बॉटल होनी चाहिए और वो भी ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए. दिस इज अ rejuvenating collagen boosting serum boosted with peptides that restore youthfulness, resulting in younger, firmer looking skin. It is suitable for all skin types plus acne prone skin as well. And what concerns it targets? It targets saggy skin, wrinkles and fine lines. And one more thing, only 18 plus people can use this serum. And the one thing which I really like about this serum is that this is pregnancy and lactation safe. Why brand claims that it is the most potent formula? Let me tell you why. There are 2-3 reasons. Because this multipeptide serum also has power of 7% matrixyl 3000, a combo of two potent peptides that proven to smooth wrinkles and increase elasticity. This serum also has 3% bioplacenta with 5 peptides that promotes cell growth and ultimately reduce aging. It is super hydrating serum that is proven to boost skin moisturization by 83% instantly and reduce wrinkles under eyes by 46% and crow's feet by 21% in just 4 weeks. And one more thing, it contains premium quality ingredients. Premium quality of matrixyl 3000 by UK and bioplacenta by Korea, which is the leading global supplier of skincare industry. Now I will talk about its ingredients. Hanji beta. It has lots of ingredients, but I will talk about the 2-3 main ingredients which are important to talk about. The first one is matrixyl 3000. It supports the activation of the skin repair process, particularly at the level of fragile and UV damage prone papillary dermis. Now what is papillary dermis? This is the thin top layer of the dermis जो कि होती है inner layer of the skin और वो epidermis के बिल्कुल नीचे होती है. So we can say that it is suitable and effective anti-aging serum for all skin types. And the next main ingredient is the bioplacenta. It is similar to the human placenta. Bioplacenta is an ingredient which contains amino acids, vitamins and 5 growth factors that work together to improve the skin and help skin rejuvenation and cell revitalization. Revitalization means new life. It provides new life to the skin and promotes collagen as well. Last main ingredient is the hyaluronic acid, which smooths the skin, which hydrates the skin and provides plumpness to the skin. Ultimately helps in getting rid of fine lines as well. So this is what brand claims about the product, that what it has and how it works on the skin. Now let's talk about the another product, that is a Van Dyke 10% multipeptide anti-aging night serum. It is a collagen boosting face serum. It provides firmer, younger looking skin with polypeptides, oligopeptides and 7% matrixyl, and it is also suitable to all skin types. Also targets fine lines, saggy skin, dehydrated skin, dull skin, photo aging and aging signs. It is fragrance free. Even Minimalist one is also fragrance free. It is also essential oil free, paraben free, sulfate free. आजकल mostly सब ऐसे ही होते हैं. Okay. Now what to say about this product? I was literally shocked when I was about to read about this product because मैं पहले product को पढ़ती नहीं हूँ, पहले मैं इसको use करती हूँ because I believe in the feel of the products rather than the ingredients. So मैंने इसको use तो कर लिया, एक mind makeup भी बन गया कि okay, these both can be compared with each other. But the thing is this, when I opened their site, I was shocked to see यार इन्होंने एक एक चीज कॉपी करी हुई है. मैं अभी स्क्रीन पे चला रही हूँ, you can see कि मैंने जो भी कुछ भी बोला है मिनिमलिस्ट के सेरम के बारे में, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं है यार. You can see that
बेटा आप साइड पे हो ना, थोड़ा सा वो फोकस नहीं कर पा रहा। बोथ हैव द सेम थिंग ऑन द आउटर पैकेजिंग एज वेल। लुक एट द बॉटल्स, यार बॉटल्स भी बिल्कुल सेम है। मैंने ना सिर्फ इसकी बॉटल को देख के मंगवाया था कि यार मिनिमलिस्ट की तरह लग रही है, तो लेट्स ट्राई इट आउट। आई शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट बिकॉज आप सेम ही कर लो। जो मैंने इसके बारे में बोला है ना, वो इसके बारे में बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसा ही लिखा गया है इनकी साइट के ऊपर। So let's talk about my personal experience, what I feel about these two products. They both are 30 ml. इसकी शेल्फ लाइफ है मिनिमलिस्ट की 18 मंथ्स। पता नहीं मैंने फेंक दिया इसका, इसकी भी इतनी ही होगी, अगर सब कुछ कॉपी करा है तो शेल्फ लाइफ भी कॉपी करी ही होगी। मिनिमलिस्ट कॉस्ट अराउंड 699, लेकिन आपको 650 का मिल जाता है ये ऑफ के बाद। एंड इफ आई टॉक अबाउट द विंदायक वन, मैंने इसको खरीदा था 250 रुपए में, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन अब ब्रांड ने इसका जो रेट है वो बढ़ा दिया है, दैट इज अराउंड 350 रुपीज। लेकिन इसका भी जो एमआरपी वो शो कर रहे हैं, दैट इज 550 रुपीज। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर्स, नाउ लेट्स सी इसके टेक्सचर्स देखते हैं। ये ना ऐसे क्लाउडी सा है, आप देख पा रहे हो, जाए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है मिनिमलिस्ट वन। इट इज दिस इज हाउ इट ग्लाइड्स ऑन द स्किन। विंदायक वन ट्रांसपेरेंट एज कंपेयर टू द मिनिमलिस्ट वन। मैं ना इसकी क्लिप्स डाल दूंगी, डोंट वरी। इनमें एक मेन डिफरेंस है जो कि अभी आपको बताते हैं। विंदायक वन इज एब्सॉर्ब्स इनटू द स्किन क्विकली एज कंपेयर टू द मिनिमलिस्ट वन। नाउ लेट्स अप्लाई इट ऑन द फेस। ये मैं लगा रही हूँ मिनिमलिस्ट का, ठीक है? हाँ बेटा, क्या मिनिमिस्ट का लगा रही हूँ। राइट नाउ आई हैव नथिंग ऑन माई फेस, नथिंग एट ऑल। नाउ लुक, अच्छा इंग्लिश में ही बात करूँ। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन द स्किन. It takes 20 to 30 seconds to get absorbed into your skin. Now I'm applying Vindayak one. No बेटा, ये बच्चों का नहीं है. If you see like this, you will say they both are same. It also gets absorbed now. Now look at the after effect. When I used it for 2-3 days regularly, I literally found the minimalist one is more hydrating as compared to the Vindayak one, no doubt. As you can see on the screen as well, ये जो right side है मेरी, वो minimalist की है. मुझे जो skin थी अपनी hydrating ही लग रही थी. But if I talk about the left side, the product was totally synced into my skin. जो minimalist था उसमें hydration face के ऊपर अभी भी लग रहा था मुझे. मैं ये नहीं बोल रही कि Vindayak one वाला अच्छा नहीं है, but I want to say अगर हम बात करें hydration की, minimalist one is better as compared to the Vindayak one because if I talk about the hydration, एसी में सोने के बावजूद भी अगले दिन मेरा स्किन जो था काफी प्लम था. I personally feel कि ऑयली स्किन वालों को शायद उतना पसंद ना आए. If you're beginner, if you're oily skin, then start with this serum because बस हाइड्रेशन में थोड़ी सी कमी है. If we compare, otherwise this one is also good. जब comparison आ जाता है तो obviously छोटी-छोटी बात को notice किया जाता है. But there is difference in the color of the texture as well. So I would say there is something jhol in this Vindayak one. But I'm not saying this is not good one. This is a good one. But as compared to minimalist one, this is not as good as minimalist one. So it's better to start with the Vindayak one if you are beginner, if you are oily skin. But if you are like me, normal, dry and combination skin person, even oily skin one can also try. But they have to keep this thing in mind, use less quantity. I literally love this serum. It literally plumps your skin, works on the fine lines. मेरा यहाँ पर है. It literally smoothens the fine lines. या जैसे यहाँ पर मैंने लगाया. Literally smoothens the skin. This is only reason I purchased this serum because मेरे यहाँ पे fine lines दिखने लग गई थी. एक ही दिखती है वैसे. अभी तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ तो वो भी शायद इतनी ज़्यादा visible नहीं है. This is how it smoothens your skin. Now you can't say there is a fine line. This is what I just want to say, that it smoothens the skin very nicely. But I won't say that it completely diminishes your wrinkles and fine lines. But it definitely repairs your skin. Even if you are in the starting period of your 30s, start using multi-peptide serum. I want to say one more thing. The both are super lightweight and absorbed into your skin quickly. But if I talk about the minimalist one, I'm literally feeling कि ये जो side है वो काफी hydrating है as compared to this one. यहाँ का जो skin है वो मुझे hydrating लग रहा है लेकिन उतना hydrating नहीं लग रहा. All skin types would go for this without any doubt. ये भी बुरा नहीं है. It can be comparable to some extent only. ये कुछ करता है कि नहीं करता है, अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिवली इफेक्ट्स योर स्किन. बट इफ आई टॉक अबाउट द मिनिमलिस्ट वन, ये तो आपको विद इन 10-15 डेज आपको अपने स्किन के ऊपर इसका असर दिखाई देने लग जाएगा कि जो कि आपकी फाइन लाइंस है वो काफी स्मूथ हो जाते हैं. विंदायक वन ये मेरी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही नॉन स्टिकी है. मुझे थोड़े से हाइड्रेटिंग सीरम ज्यादा पसंद आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन आई लाइक मिनिमलिस्ट वन. बोथ आर गुड सीरम बट मिनिमलिस्ट वन इज
बेटर। इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ ना कुछ तो फर्क है क्योंकि इनके टेक्सचर में ही बहुत ज्यादा फर्क है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज serums अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यू कैन यूज ट्वाइस एंड थ्राइस अ वीक, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो ट्वाइस एंड थ्राइस ही यूज करती हूँ। मेक श्योर यू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे इवन इफ यू यूज एनी काइंड ऑफ एसिड और नॉट, सनस्क्रीन इज रियली मस्ट। And one more thing, my Foxtail coupon code has been changed. It is now Neha Sharma 15. And if you want to purchase any product from Foxtail, you can get flat 15% discount using my code Neha Sharma 15. And if you will have any doubt, you can comment me. I will definitely reply. So this is what I just want to say about this product. And I meet you soon in my next video. Till then, bye bye. Take care.